In other news, Ayodhya is set to witness another historic Pran Pratishtha. The Ram Mandir in Ayodhya is all decked up for its divine glory for the second phase, Radhika, of the consecration of Lord Ram along with his family. This is going to be taking place in the Ram Darbar, but this is going to be the first floor of the temple. This will be done through a 3-day ceremony comprising of Vedic, rituals that are going to be commencing, and those rituals really started early this morning, Radhika, and they're going to continue till the 5th of June. That's right. In fact, talking about the significance of the timing itself, Divya, the event will coincide with the festival of Ganga Dashera. The newly completed sections of the temple are expected to be open to devotees within a week following the June 5 consecration. In fact, to know more on this, I'm being joined by Sikta Dio, who is in Ayodhya, to give a sense of what is happening on the ground. Sikta, a very good morning to you. Ayodhya set for second grand consecration. Take us through the preparations that are going on at this point for the upcoming ceremony at the temple. Well, for the Pran Pratishtha 2.0, the rituals have just started today. 6:30 a.m. was the time, and the Vedic and the religious rituals have started inside the temple complex. And we are right in front of the temple gate where the devotees are reaching. Some know that the consecration rituals are on inside, or some have come for the Ram Lala Darshan. And with me is a young girl who's come from Bihar, and her name is Babli. आप पहली बार आई हैं? जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बताइए कि आपको पता है अंदर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं? जी, बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है। अभी जाने का मौका ही नहीं मिला, बहुत सारी भीड़ है। अभी लाइन में लगे हैं हम लोग। बताइए, बहुत भीड़ है। आपको मालूम था कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है? तैयारी है, तभी तो हम लोग आए हैं। मालूम था तभी। मानिए 22 जनवरी को हमको मतलब इतनी भीड़ थी कि हम लोग आ नहीं पाए जब पहली बार हुआ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अब मौका मिलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। राम की भक्ति में आप गाती भी है ना? हाँ, मैं राम की भक्ति में हमेशा गाती हूँ। मैं बोलती हूँ उनसे कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुजरिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसीलिए हम बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है कि सबसे पहले मैम आपसे भी मुलाकात हुई, इसलिए बहुत खुश है। और दूसरी बात है अब 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी राम दरबार की, लेकिन आम श्रद्धालु जो हैं, जो आप और मैं जैसे आम भक्त हैं, उनके लिए तो खुलने वाला नहीं है, तो फिर आना पड़ेगा। हाँ मैम, बट अब क्या करेंगे, जैसे गतिविधि रहेगी उसका पालन तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम नागरिक हैं, तो उसके साथ चलना पड़ेगा। हम तो तोड़ नहीं सकते कोई नियमों के। जैसे भी हमें मिलेगी कि हाँ नहीं, ये दर्शन करना है, वैसे हम आकर दर्शन करेंगे। हमारी सरकार मतलब जैसे है, जैसे परमिशंस मिलेंगी, जैसा दरबार खुलेगा तो आम श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। सो दिव्या एंड राधिका, दिस इज द एक्साइटमेंट, दिस इज द फेस्टिविटी। यू सी this crowd reaching here like any other morning at the Ram temple, but most of them know that the consecration ceremonies are on inside. The rituals have started, and they need to wait because 5th June will be the day when Raja Ram will be consecrated, and that's the day after which the trust is going to decide when is it going to open for the regular pilgrims and devotees. So quite a number of people coming here, and since last 15 months, around 80,000 to 1 lakh pilgrims per day reach this Ram temple, which is not only a temple but also a center for religious and cultural awakening throughout the world. And we have few more सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। अरे दिल्ली से आई हैं, और प्राण प्रतिष्ठा चल रही है राजा राम की, राम दरबार खुलने वाला है कुछ ही दिनों में। अच्छा अच्छा, बहुत आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी। आप पहली बार आई हैं? हम पहली बार आए हैं। अच्छा, हाँ, तो दर्शन हो चुके हैं या फिर? दर्शन हो चुके हैं। तो आप जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर राम दरबार होगा, और बाकी और मंदिर हैं जैसे शिव जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, वो भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो वो देखने का मौका मिल पाया अंदर जब आप अंदर गई? ना, अंदर वो नहीं देखने का मिल पाया। तो आप लोग सिर्फ रामलला के of course, the rituals will culminate on the 5th of June, and that's going to happen at about 11:25 in the morning.
and it's going to be followed by an Aarti ceremony, and of course Chief Minister Yogi Adityanath is going to be there, but it also marks the birthday of the Chief Minister on the 5th of June, and this also marks the festival of the Ganga Dashera, so a lot happening on the 5th of June. Right. 5th of June is the day when the final consecration ceremony will take place around 11:30 a.m. That's when the Uttar Pradesh Chief Minister is going to arrive here, and in his presence the consecration ceremony will happen. It will be live streamed for people to watch. While the rituals are still on, the live streaming is not on, so we don't have a very good idea about what's happening, but we have been told that the yajna and the home is on inside, and the deities have been purified with the sacred water which was carried through the Kalash Yatra yesterday evening by the women to this temple complex, and now the rituals have taken off, and the next 2 days are pretty crucial. 6:30 a.m. to 6:30 p.m. is the time for today and tomorrow where the rituals will be taking place. And 5th June, Ganga Dashera, the day which is celebrated as the day when the river Ganga descended on earth. So that's a very auspicious day and an auspicious time for the consecration, and that's when the Ram Darbar, Lord Ram, will be consecrated with the other deities. The spiritual, the divine will be invoked in the idols, and that's what people are reaching here for, and they're waiting for the doors to open for the Ram Darbar.